Hello guys, welcome to our day 6 of FRECCA batch. Today our agenda is to complete IAS 37 and IAS 10, which is small two topics. So without wasting much of the time, let's get started directly. Uh, what do you guys understand with provision? I mean, any meaning to understand what does provision mean? Anything? How do we account? What does it mean? Example? Anything? Provision is something that we create for a future probability, Mm-hmm. or it might can be for short term or long term. Yeah, So we took out some fund out of the profit for that correct. particular reason. Perfect. Perfect. Nice. So provision is basically what is mean. A provision is a liability. It's a liability of uncertain timing or amount. Basically, it's a liability जो आने वाली है, but when it's going to come, nobody knows. But its Hmm. timing is uncertain, but an amount is as well. But what are we trying to do is that uh, sorry, we are trying to take our best estimates as we can using our professional judgment and putting a figure which is fair enough to account in our books of account. Okay. Hmm. Right. Okay. A provision, a liability is what does a liability mean? Liability means it's a present obligation as a result of past event. Event. What does past event? क्या होता है past event? Let's take an example of creditor. हमने creditor से vendor से कुछ चीज purchase करी है. Because of Hmm. that, we have to pay to them in future. Something which we have created in our past that leads to creates an obligation for us as an entity to pay certain amount, which is a liability. Okay. Hmm. It's probable that it's going to throw and a reliable estimate can be made. Okay. Reliable estimate means a good amount of estimate can be made. We have certain, हमारे पास कुछ proofs हैं. Anything with our professional judgment, we are taking out the best reliable estimate and based on that we are counting provision. Right. Uh, Provision can be, you know, it can be anything as a result of past event. So it could either be constructive, the obligation could be, or legal. Legal could be anything if a contract says if we have void some contract and contract says we have to pay certain penalties in future, etc., etc. So that is a legal obligation that we have to pay. Hmm. Constructive means it's our business practices. That, for example, it's a business practice that every year, we give bonus or certain increment, certain percentage of increments to our employees. It's our business practices. और यही reputation है market में कि this entity gives good pay to their employees and continuously increases in future years. So it's a constructive obligation कि आज 10% increase किया है तो it's an obligation for me as an entity to to increase the bonus amount from 10 to 12% increment percentage. So it's an constructive obligation जो मेरे business practices मेरी policies और current statement current reputation से मेरे को दिख रहा है. करेक्ट. तो उसका भी प्रोविजंस होता है. Estimate established pattern of past business practices, published policies, current statement. Basically, it's create a valid expectation on a part of other parties. Hmm. Okay, just read it out. A plain good reading. Just read out. It's our company policies that we do clean our environments. We do clean our environments part. So यही past practices हो चुकी है.
और यही एक्सपेक्टेशन उसी उसी पास्ट प्रैक्टिसेस ने एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दिया हुआ है विद इन पब्लिक आईज दैट हम एनवायरमेंट को क्लीन अप रिक्वायरमेंट में विल हेल्प देम आउट. ओके. right, सो वी हैव टू अकाउंट फॉर प्रोविजन इवन दो वी हम नहीं चाहते कि हम करें बट फिर भी बिकॉज ऑफ पास्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड patterns that we have created उसकी वजह से it's a constructive obligation for us. Constructive मतलब we have constructed the obligation, it's not the legal. Okay. right. Generally required categories for legal: provision for litigation, provision for warranties, we create warranties provision. Litigation means केस चल रहे हैं. Environmental obligation अभी हमने just read किया. Provision for loss orders on onerous contract. लॉस ऑर्डर IFRS 15 अभी हमने डाउट सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें से. करेक्ट. Hmm. Hmm. लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वी क्रिएटेड प्रोविजन क्योंकि हमें दिख रहा है. करेक्ट. Right, right. और वो कैसे प्रोविजन के डेफिनेशन में आ रहा है? वी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, it's an obligation for as a result of past event means what? We entered into contract, we tried to perform a performance obligation, but as a result the contract is unfortunately getting converted into loss making contract. So for that, for Okay, loss making contract we have to account for loss, but how we'll learn. okay. Provision for restructuring cost. Restructuring basically अगर हम पूरा लीगल स्ट्रक्चर अपना बिजनेस स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हैं तो उसमें जो भी कॉस्ट और वो सब लगेगी विल अकाउंट फॉर प्रोविजन फॉर दैट एज वेल. करेक्ट. Right. रिस्ट्रक्चरिंग बेसिकली हम बिजनेस को चेंज कर रहे हैं या तो वाइंड अप कर रहे हैं. करेक्ट. स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना, हम या तो नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या तो नया एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, नई एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, या तो फिर जो एंटिटी लॉस मेकिंग एंटिटीज है उसको बंद कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो रिस्ट्रक्चर. रिस्ट्रक्चरिंग इज एनीथिंग प्लस माइनस, Hmm. बिजनेस स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर रहे हैं. ओके. तो उसकी वजह से भी Hmm. कॉस्ट आ रही है, दैट विल अकाउंट फॉर प्रोविजन. What all we will do not include in our provisions? These are: do not provide for future operating losses. Provision, what does provision mean? It's a future obligation as a result of past event. Future के operating loss will won't account for provision. Right. Future. Currency risk हाथ में ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, volatile है. Political risk, it's not in entity control. General Hmm. business risk वो भी कंट्रोल में नहीं है. General restructuring project, yeah, restructuring cost will include, but general project cost won't include. Okay. Maintenance or refurbishment of own assets, we won't account for provision. We directly state for account is that expense in our profit and loss. Maintenance, repair, anything. Okay. Right. Now we'll learn the de-recognition. How do we de-recognize? This is the basic structure. I mean, the branch of this chapter. First, we'll read the definition. क्या क्या include होगा? Legal constructive obligation. Correct. कैसे रिकॉर्ड Hmm. करना है? Now we'll understand de-recognition. Through use या तो through revision of estimate. अगर de-recognize हो रहा है, what we'll do? We'll debit the liability, credit the expense amount. क्योंकि वो it's no longer our liability anymore. So we'll reverse the How? entry. For example, कोई केस चल रहा है,
we have already accounted the provision in our books of account as per IAS 37 in prior years. But 2 years later, we come to know that अभी नहीं होगा. It's not uh, it's not probable that we have to pay some amount, excess amount to anyone. So the provision record किया था, we have to reverse it. ना? So the amount which is the closing balance will get debited, the liability part and credit will be the same amount. Correct? Income हो गया ना वो, अब वो it's no longer expense. Right, right. It could be anything. पहले लग रहा था, estimate लग रहा था कि the payable amount will be $10 million. But 2 years later, we came to know that no, not $10 million will be payable, $5 million will be payable. So $5 million का reverse हो जाएगा. Correct? Hmm. Through revision of estimate. Now we'll understand how do we measure first. First step. अगर लग रहा है कि फ्यूचर में पेबल हो सकता है तो हाउ डू वी मेजर इट. बेस्ट एस्टिमेट हम एस्टिमेट करेंगे उसको. एस्टिमेशन कैसे एस्टिमेशन होगा? या तो सिंगल मोस्टली आउटकम है, या तो एक सिंगल पॉसिबल आउटकम है, तो वो हम परसेंटेज के बेस पे देख लेंगे कि इफ ओनली सिंगल पॉसिबल आउटकम, तो क्या चांसेस है कि ये सक्सेसफुल होगा. क्या फॉर एग्जांपल अगर केस चल रहा है 70%, केस इज सेइंग वी हैव टू पे, 30% सेइंग वी डू नॉट हैव टू पे. If because it's 70% is probable that we have to pay, will account for provision for that amount. Correct? Single most likely outcome. Weightage average. For example, अगर इन्वेंट्री हमने आईफोन सेल किया, ठीक है, आई सोल्ड फ्यू आईफोन, 10 iPhones. Mine professional judgment says that out of that 10, 8 will get defective, 8 will get defective iPhones, and I'll have to pay claim for that amount. Correct? फिर फिर कुछ लग रहा है नहीं 6 ही होंगे, फिर कुछ लग रहा है नहीं 5 ही हो सकते डिफेक्टिव. तो अगर मल्टीपल आउटकम हो रहा है, तो विल अकाउंट अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन देयर बेस्ट पॉसिबल लायबिलिटी, आई मीन एक्सपेक्टेड परसेंटेज. कि अगर Okay. 8 डिफेक्टिव हो सकते हैं तो क्या उसका परसेंटेज है. फॉर एग्जाम्पल 8 percentage of getting 8 defective products is 50%. Hmm. Percentage of 6 getting defective, it's 60%. So that's how we're going to account for provision. Hmm? But why do we account like that? What does it say? Account, हमें प्रोविजन दिखाना है ना कि बेसिकली हमने कुछ सेल किया हुआ है. वी हैव टू शो हाँ. इन बुक्स ऑफ अकाउंट ना कि अगर हमारा ही एस्टिमेट कह रहा है कि 10 में से 8 फोन का क्लेम तो हमें आ सकता है, तो Hmm. हमें 8 फोन का प्रोविजन भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना. अगर हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो वी आर मिस रिप्रेजेंटिंग द मिसस्टेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वी Right, आर right. अंडरस्टेटिंग आवर प्रॉफिट. तो ये रिकॉर्ड करना जरूरी है जिससे यूजर्स को, हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे तरीके से पता चले कि वी हैव अकाउंटेड ऑल आवर लॉसेस, ऑल आवर फ्यूचर पॉसिबल पेमेंट्स इन आवर करंट ईयर, जो भी करंट ईयर में हो सकती हैं. करेक्ट? तो ट्रू रियलाइबल पिक्चर हमें शो होए हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन. This is Right. the motto Understood. to account for provision. Okay. Hmm. This is the example of single possible outcome. If there is 70% probability that a company B have to pay damages of USD 600,000 in a legal case, or 30% है कि case will be dismissed, then the provision is measured at 6,000 because it's probable that B will lose, and if B loses, B will pay. करेक्ट? ऐसा नहीं करेंगे कि 60,000 इंटू 70%, तो 4,200 रिकॉर्ड नहीं करेंगे. नहीं, अगर एक ही पॉसिबल आउटकम दिख रहा है तो फिर हमें सेम अमाउंट पूरा रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर लेंगे. करेक्ट? क्योंकि क्वेश्चन से दिख रहा है 70% है पे करने हैं, तो हम 4,200 क्यों रिकॉर्ड करेंगे, 6,000 ही करेंगे ना पूरा का पूरा. Hmm. करेक्ट? Right. जितनी लायबिलिटी आ रही है वही पूरी रिकॉर्ड करेंगे. आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू, दिस वन.
हो रहा है क्वेश्चन? 1 second. Can you please help? Yes, क्वेश्चन इज सेइंग कि $2 million अगर पे करने का आया, इट्स क्या प्रोबेबिलिटी है? 75%. Hmm. If minor defects were detected in all products, repair cost would be this 2 million. If major defects were detected, repair cost would be 4 million. Its past business practices and future expectation indicate that for upcoming year, 75% of the goods will have no defect, 20% of goods sold will have minor defect, correct? 5% of good will have major defect. Right. This is the answer. 75% नील है, कोई डिफेक्ट नहीं होगा तो जीरो एक्सपेक्ट, जीरो लाइबिलिटी. 20% चांस है कि माइनर डिफेक्ट हो सकता है, तो उसका कॉस्ट कितना आ रहा है? $2 million. सिंपली परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी, इतने परसेंट चांस है कि हो पाएगा. तो 4,400. फिर $4 million का 5% चांस है कि मेजर डिफेक्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट में. तो 2 million. बेसिकली क्या हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दैट्स व्हाट वी लर्न एज वेल, कि इट्स एन एस्टिमेट द एंटिटीज पास्ट बिजनेस प्रैक्टिस एंड फ्यूचर expectation Hmm. indicate that for the coming year 75, 20 and 5, this will be the breakup of this defect and defect warranty standard. Understood? Yes. इट्स एन एस्टिमेट, और उसी एस्टिमेट को हमें भी एस्टिमेट की तरह रिकॉर्ड करना है. Got it. ठीक है. मेजरमेंट, दैट्स व्हाट वी डू मेजरमेंट ना. Reliable estimate, then discount if impact is material. Discount means what? That's we learn discounting in which chapter? IFRS 15. Sorry. 15. Revenue. रेवेन्यू में किस में डिस्काउंट कर रहे थे? No, sorry. IAS 16. करेक्ट, Discounting factor. करेक्ट, करेक्ट. तो इसमें डिस्काउंटिंग भी अगर मटेरियल है विद इन 10 years, 15 years, 20 years, कुछ पेबल आ रहा है, तो डिस्काउंटिंग इट, करेक्ट. Hmm. जो भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, और हर साल को रीमेजर कर रहे हैं, करेक्ट ना. इंटरेस्ट कॉस्ट जा रही है, प्रोविजन जा रहा है, हर साल लाइबिलिटी का कम हो रही है, Yes. सॉरी इंक्रीज हो रही है विद द इंटरेस्ट कॉस्ट, Yes. करेक्ट. Hmm. सॉल्व दिस क्वेश्चन वन. 1 second.
Just a thing. Yeah, done. Then what is the liability? 11680. Correct. 24,000 for 7% and 2 lakh for 5%, Correct. which Correct. Correct. costs 11680. Do you agree with this question? With the concept which I've made you understood? और इससे कुछ question is right? I mean, जो ये कहना चाह रहा है illustration 3 में. Ah, we have made provision for the goods that have defects. So yeah, it's true. No, but the amount, like जो amount 4,000 है और 5,000 total cost आ सकती है. But provision is always the estimate, not a worst case scenario. Correct? Hmm. ऐसा तो case अगर हम we are fighting with one of the case says that maximum liability which you maximum in the worst case scenario $10 million पे कर सकते हैं. But estimate क्या कह रहा है अपना? Estimate is saying no $5 million will be paid. तो हम provision भी 5 million का ही लगाएंगे ना, क्योंकि वो estimate है. Worst case से क्या सबका worst case लगाने जाएंगे तो हम ही losses में आ जाएंगे, इतने provision book कर देंगे तो. Right. Correct? What is contingent liability? What is contingent liability? The liability that has a certainty to occur in future. नो बट इट्स अ प्रोविजन ना, वो तो कंटीजेंट, वो तो लायबिलिटी है, प्रोविजन है वो तो. तो हम प्रोविजन करते हैं. कंटीजेंट लायबिलिटी मींस इट्स पॉसिबल, इट्स नॉट प्रोबेबल. These are two different terminologies. Provision is probable. करेक्ट. इट्स प्रोबेबल दैट 100%, 100% नहीं, अबव 50% देयर चांसेस कितना पेमेंट तो आ ही सकता है. And बट कंटीजेंट contingent लायबिलिटी liability इज is पॉसिबल, 25%. पॉसिबल बिलो 50%. हाँ, इट्स right. पॉसिबल Below ऑब्लिगेशन कि 50%. आ सकता है. करेक्ट. पॉसिबल, हो Yeah. सकता है, इट्स नॉट फिक्स्ड. तो उसका हम कुछ अकाउंट नहीं करते, हम सीधा उसको डिस्क्लोजर में बुक करते हैं. हम डिस्क्लोजर में शो करते हैं कि द कंपनी इज अंडरगोइंग विद फ्यू केसेस एंड दिस केसेस आर नॉट दैट प्रोबेबल फॉर फॉर due to which we should record it as provision in books of account, but we think that it's a possible, it could come, that's why we are noting it in our notes to account in our disclosure. Okay. करेक्ट. तो इसकी अकाउंटिंग कुछ नहीं होगी, सिंपली हम डिस्क्लोज करेंगे. बट यू हैव टू असेस कि लायबिलिटी क्या है, पॉसिबल है, प्रोबेबल है. अगर प्रोबेबल है तो प्रोविजन, नहीं प्रोबेबल है डिस्क्लोजर, सिंपल. ओके. Okay. सेम. अब present obligation arises from a past event but is not recognized, because why it's not recognized? It's not probable that the outflow of resources will be required to settle the obligation, or the amount obligation cannot be measured with sufficient reliability. Correct. Hmm. 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 हम अमाउंट मेजर नहीं कर पा रहे, एंड द अमाउंट, या तो फिर अमाउंट प्रोबेबल नहीं है, पेबल, इट्स पॉसिबल. सो contingent liability is disclosed as notes to account only. No entries are made into financial statement other than this disclosure. Correct? But not every liability will be contingent. No? We हाँ have हाँ. to. असेस करना पड़ेगा कि क्या ऑब्लिगेशन है कि नहीं है. अगर ऑब्लिगेशन नहीं है, इट्स पॉसिबल लग रहा है कि नहीं आ सकता है, इट्स बिलो 50%, तो विल डिस्क्लोज. अब वो लग रहा है तो विल रिकॉर्ड एज How प्रोविजन. how do we assess it? सी एट योर लेवल मोस्टली क्वेश्चन में दिया होगा, बट थोड़ा सा प्रोफेशनल जजमेंट भी यूज करना पड़ेगा कि व्हाट क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से. Okay. ठीक है, क्वेश्चन में Language. हाँ लैंग्वेज से समझना पड़ेगा कि Hmm. क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. Hmm. Hmm. करेक्ट. अगर क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली नहीं कह रहा कि इट्स चांसेस ऑफ गेटिंग ऑब्लिगेशन इज जीरो बिलो 50%, so you have to use your judgment. Right.
what are contingent assets? What are contingent assets then? The same as that सेम contingent ऑफ liability. लायबिलिटी बट वाइस वर्सा. अब इसमें क्या हो गया, हमने कस्टमर के ऊपर कुछ केस किया हुआ हाँ. है एंड देर आर वेरी लेस चांसेस कि हमें उसका क्लेम मिलेगा. कि हमने कस्टमर के ऊपर लीगल केस फाइल किया हुआ है कि ही ओड फॉर एग्जांपल रिसीवेबल, हम हमारा रिसीवेबल था, ही इज नॉट पेइंग अस एनीमोर, वी हैव फाइल्ड लीगल केस ऑन हिम एंड इट्स पॉसिबल दैट इट माइट पे टू अस. तो अगर ये है, तो अगर पॉसिबल है कि हम हमको पेमेंट मिल सकता है, तो हम सिर्फ डिस्क्लोजर में दिखाएंगे. अगर कॉन्टिजेंट एसेट प्रोबेबल हो गया कि द रिसीवेबल इज गोइंग टू पे अस, इट्स मोर देन 75% चांस कि वो हम पे कर ही दे, हम कॉन्टिजेंट एसेट बुक्स में दिखाएंगे. करेक्ट. Okay. बस. So this does include both provision and contingent liability, like the rules for that. If हाँ. it's if it's possible, क्या. we will disclose, and if it's probable, we will करेक्ट record in करेक्ट books of करेक्ट करेक्ट accounts. करेक्ट करेक्ट. बस वर्डिंग चेंज है, असेट एंड लायबिलिटी. Asset which is Got it. something given we will be receiving, and liability we will be liable to pay. Okay? Right. Degree Right. of probability, there could be four modes of degree of probability. Virtually certain मतलब दिख रहा है 90% चांस है कि ये तो है ही है, पेबल ही है, तो फिर तो लाइबिलिटी बुक करो. Hmm. और अगर असेट है कि दिख रहा है कि वर्चुअली सर्टेन है, असेट करो, रिकॉर्ड करो. अगर प्रोबेबल है, तो दोनों प्रोबेबल है तो प्रोविजन तो रिकॉर्ड होगा बट असेट होगा डिस्क्लोज. अगर पॉसिबल है, अगर पॉसिबिलिटी है, तो लायबिलिटी में हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, असेट में इग्नोर करेंगे इसको. कि कुछ नहीं, अगर पॉसिबल ही है तो हम ठीक है, आएगा तो ठीक है, पैसा नहीं आएगा तो भी ठीक है, दैट वे. Hmm. अगर रिमोट ही है, दोनों के चांसेस लेस देन 10% है कि लायबिलिटी भी आ सकती है और 10% चांस है कि हमें रिसीवेबल से पैसा मिलेगा, तो दोनों इग्नोर. दिस इज अ चार्ट, समरी चार्ट. Got it. ठीक है. प्रोबेबल है अगर कॉन्टिजेंट एसेट में, तो मेक श्योर करना विल बी डिस्क्लोजिंग, पर अगर वर्चुअली सर्टेन है तो ही हम रिकॉर्ड करेंगे. करेक्ट. वर्चुअली सर्टेन मोस्टली इसका परसेंटेज टर्म में नहीं दिया है, बट स्टिल वर्डिंग सुन के लग रहा है मोर देन 90% कि वर्चुअली सर्टेन दिख ही रहा है, मतलब इट्स सर्टेन. पर प्रोबेबल है तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे ना तो बुक्स में. प्रोविजन में सी, अकाउंटिंग रूल्स क्या कहते हैं कि ऑलवेज ना, वर्स्ट केस नहीं, ऑलवेज बुक योर लॉसेज विच इज आर लायबिलिटीज. ठीक है. बट डोंट Mm-hmm. रेप्लिकेट द सेम इन योर इनकम केस. इनकम जब दिख रही है कि वर्चुअली सर्टेन है तभी रिकॉर्ड करो, वरना पॉसिबल है तो इट्स डिस्क्लोज, रिकॉर्ड मत करो. दैट्स व्हाट द स्टैंडर्ड से. सेफ साइड लेके चलते हैं ना. Okay. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वही कह रहा है कि लॉसेस को एडवांस में बुक करो, और वही हम कर रहे हैं कि प्रोबेबल है फिर भी हम बुक कर रहे हैं, वी आर बुकिंग इन एडवांस. पर अगर Mm-hmm. इनकम पॉसिबल है, प्रोबेबल है, वी आर डिस्क्लोजिंग. बट अगर वर्चुअली सर्टेन है, दिख गई इनकम की 100% आने वाली है, विल बुक इट. तो थोड़ा सा इनकम और एक्सपेंस में है, बट ये लॉजिक है उसका कि दे से Right. बुक योर लॉसेस इन एडवांस. Okay. करेक्ट. Hmm. और ये ऐसे भी समझ लो, ऑलवेज फोकस ऑन योर वीकनेसेस मोर देन योर स्ट्रेंथ. क्योंकि स्ट्रेंथ तो अगर दिख रही है तो इट्स गोइंग टू हेल्पफुल इन फ्यूचर. और ऑलवेज फोकस ऑन वीकनेसेस. ऐसे भी समझ सकते हो, जनरल टर्म. Right. तो वही लॉजिक यहाँ पे भी है. Hmm. uh, you know the journal entries. Now I want you to tell me the journal entries to record provision. What is the journal entry record provision? The provision is liability. So credit provision Hmm. and And debit would be expense, provision expense. right, yeah. Hmm. Correct? Hmm. And same for contingent asset. If it's virtually certain, then Um, vice versa, like.
हाँ बट क्या Um, वाइस वर्सा, एंट्री क्या होगी? Contingent asset to expense. वाई एक्सपेंस? इट्स योर इनकम ना देन। Oh yeah, sorry. Contingent asset to सी income. हमेशा ना तीन गोल्डन रूल्स को याद कर लो, पी लो इसको, आई वुड से। डेबिट वुड बी आर एक्सपेंस, डेबिट वुड बी आर असेट, डेबिट वुड बी व्हाट कम्स इन, Hmm. credit would be what goes out, credit would be income, credit would be liability. Hmm. करेक्ट? Yes. तो अभी इस वर्चुअल प्रोविजन वाले केस में क्या हो रहा है? वी आर बुकिंग आर एक्सपेंस बिकॉज इट्स आर एक्सपेंस, वी आर बुकिंग आर लाइबिलिटी, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट लाइबिलिटी। asset, in case of asset, we are booking our asset which is debit, asset debit, credit is our income because it's our income, it's our Hmm. asset. Right. Okay. Restructuring, that's what we learn na, restructuring provision मतलब anything which are changing our structure of a business, bringing new entities, expanding या तो deleting loss making entities, anything. Hmm. तो restructuring में क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, पहले तो थोड़ा ब्रॉड वे में सोचते हैं। सी एम्प्लॉय प्लस माइनस होगा, करेक्ट? कुछ एक्सपांड कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट अचीविंग कॉस्ट, एनीथिंग। Sales. हाउ सेल? Increase, decreasing sales नहीं will be बट हम considered. अभी प्रोविजन की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग मोर अबाउट एक्सपेंसेस ना, Okay. इसलिए मैंने एक्सपेंस हाईलाइट किया। सबसे पहले तो Hmm. एम्प्लॉय रिस्ट्रक्चरिंग, एम्प्लॉय कॉस्ट, Hmm. लोकेशन रेंटल कॉस्ट अगर एक्सपांड कर रहे हैं तो, न्यू ऑफिस कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन उसका लगेगा, करेक्ट? Yes. रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन, रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन कब रिकॉर्ड करेंगे? उसके लिए प्रॉपर डिटेल प्लान होना चाहिए बिजनेस के पास, जो बि- ऐसा प्लान होना चाहिए दैट क्रिएट अ वैलिड एक्सपेक्टेशन in those affected by plan. Who all are affected by plan? The business itself is affecting, and the employees who are working there, Hmm. and many more. Everyone, even the stakeholder. For example, uh, हम आई ओन अ इंडस्ट्री, और वो इस जगह पे इंडस्ट्री है जहाँ पे आई गिव मेनी एम्प्लॉयमेंट टू पुअर पीपल, फॉर पीपल हु लिव इन स्लम। तो वहां से मैं मेरी इंडस्ट्री को उठा के कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है? तो उसके वजह से उस स्लम्स के पीपल की एम्प्लॉयमेंट चली गई, दोज आर अफेक्टेड। Hmm. तो इट देयर शुड बी अ डिटेल प्लान which creates a valid expectation in those affected by plan. बोर्ड डिसीजन ऑन इट्स ओन इट्स नॉट सफिशिएंट कि भाई बोर्ड ने डिसीजन ले लिया कि ये करना है, इट्स नॉट सफिशिएंट। प्रॉपर प्लान होना चाहिए, और जिसको जो इम्पैक्टेड है उनको पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है, करेक्ट? Right. Hmm. और वो प्लान में क्या क्या स्पेसिफाई करना जरूरी है? पार्ट ऑफ द बिजनेस अफेक्टेड, कौन सी पार्ट ऑफ द बिजनेस इज गोइंग टू अफेक्ट, लोकेशंस क्या होंगी, कौन सी लोकेशन अफेक्ट हो रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अगर टर्मिनेट हो रहे हैं तो कितने होंगे, कौन कौन होंगे, हो सकते हैं, कौन से एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू इनकर, एंड टाइमिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कि हम कब इस रिस्ट्रक्चरिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। Hmm. दिस साउंड्स लाइक अ प्लान ना, कि हम जो जो इम्पैक्टेड हमें उनको बता दिया, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन सी लोकेशन पे है, कौन से एक्सपेंडिचर इनकर होंगे, कौन से टाइमिंग पे एक्सपेंडिचर इनकर होंगे, कौन सा पार्ट ऑफ द बिजनेस इम्पैक्ट होगा, करेक्ट? Yes. 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 ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। Company A decides in January that it will reclose a research facility and replace some human employee with a robotic factory. Hmm. इसका मतलब कौन इम्पैक्टेड है? ह्यूमन। Yes. रोबोटिक्स तो ठीक है, वो न्यू लॉन्च कर
बाय मार्च एबीसी रिसर्च यूनिट 25 ड्रॉन अप प्लान हो गया. 25 research assistant and 5 supervisor. Cost will be this. Employees are informed of plans in June or July, sorry. Or restructuring begins in November. हम्म. तो नवंबर में ऐसा नहीं कि रिस्ट्रक्चरिंग हमने शुरू किया नवंबर से तो तब हम बुक करेंगे रेवेन्यू. नो, जिस दिन हमने प्लान ड्रॉ किया एंड द प्लान हैज क्रिएटेड वैलिड एक्सपेक्टेशन, करेक्ट, तो उस हमें दिन से प्रोविजन स्टार्ट जुलाई होगा. में बुक करना पड़ेगा. राइट. करेक्ट. ऐसा नहीं कि जब से रिस्ट्रक्चरिंग शुरू करेंगे, नहीं. प्रॉपर प्लान बना और उस प्लान ने वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी टू whom those are affected and this plan includes all this. कौन सी बिजनेस क्या क्या इसमें इसमें आगे इसमें ही लिखा है ना कि वी आर रिप्लेसिंग विद रोबोटिक. हम्म. करेक्ट. तो इसमें हम्म. लोकेशन नहीं है, इट्स काइंड ऑफ कि कौन से न्यू रिसोर्सेज दैट वी आर एडिंग अप. करेक्ट. Now we understood at what time should we record. Now we understood what to include in the cost and what to exclude. Include unavoidable cost. For example, अगर एम्प्लॉय को हटा रहे हैं तो हम्म. ना कॉन्ट्रैक्ट में होता है, यूजुअली क्या होता है कि कंपनीज themselves firing their employees ना, तो क्या होता है कि दे यूजुअली पे टू एम्प्लॉय 2 months ऑफ सैलरी, 1 month ऑफ सैलरी, ताकि एंड वो हाँ. एक महीने में वो दूसरी जॉब ढूंढ सके एंड कंपनी इज इन अ वे सपोर्टिंग देम. करेक्ट, क्योंकि राइट. कंपनी निकाल रही है उनको. हम्म. सो अगर कंपनी निकाल रही है तो व्हाट कॉस्ट आर अनअवॉइडेबल कॉस्ट. अनअवॉइडेबल कॉस्ट मीन इधर पेनल्टी. अभी हम रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट पे कर रहे हैं, हम एम्प्लॉय को 1 month की सैलरी एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, जो करंट मंथ की है वो तो पे कर ही रहे हैं, बट रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से कौन सी एक्स्ट्रा कॉस्ट कॉस्ट आ रही. सैलरी तो जो हम पे कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, बट एडवांस रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से क्या एक एडवांस कॉस्ट पे कर रहे हैं, उसकी वजह से द वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सैलरी जो हम उनको पे कर रहे हैं रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से. राइट. करेक्ट, तो वो हम कॉस्ट उसमें ऐड करेंगे रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन. करेक्ट. हम्म. और ऐसी सारी अनअवॉइडेबल कॉस्ट हम बुक करेंगे एंड नॉट एसोसिएटेड विद ऑनगोइंग एक्टिविटीज. जो, जो ये समझ क्वेश्चन क्या क्या कहना चाह रहा है, व्हाट दे ट्राइंग टू से. नॉट एसोसिएटेड विद ऑनगोइंग एक्टिविटीज मतलब ऑनगोइंग एक्टिविटीज इज व्हाट. सैलरीज हम जो फॉर एग्जांपल हमने हमारा प्लान हमने बना लिया नवंबर में, मार्च में हम टर्मिनेट कर रहे हैं एम्प्लॉय को, बट हमने जैन में बताया, प्लान सबको बताया कि कौन कौन अफेक्ट हो रहे हैं मार्च में. ठीक है, तो हम जैन से हम प्रोविजन बुक करेंगे. हाँ. करेक्ट. तो ऐसा नहीं कि हम जैन फेब मार्च की जो सैलरी पे कर रहे हैं वो भी बुक करेंगे, नहीं. कौन सी चीज नॉट एसोसिएटेड विद द ऑनगोइंग एक्टिविटीज, मतलब ऑनगोइंग एक्टिविटीज क्या है अभी. ऑनगोइंग एक्टिविटी सैलरी नॉर्मल, मार्च से इज नॉट नॉट ऑनगोइंग एक्टिविटी फॉर अस, मतलब जो प्लान के ऑनगोइंग कॉस्ट है. ओके. बेसिकली व्हाट इज ट्राइंग टू से कि जो रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से तो कॉस्ट आई है, हम्म. रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से दैट विल हम्म. ऐड, अदर विल वोंट. और अदर्स क्या नॉर्मल जो फैब और मार्च की सैलरी पे कर रहे हैं वो तो क्यों वो क्यों प्रोविजन में ऐड करेंगे, वो तो उतनी तो वो सर्विसेज भी दे ही रहे हैं ना साथ साथ एम्प्लॉय. राइट. करेक्ट. तो नॉट एसोसिएटेड विद ऑनगोइंग एक्टिविटीज. ऑनगोइंग मतलब जो नॉर्मल चल रहा है, मार्च फेब मार्च जैन फेब मार्च जो नॉर्मल चल रहा है. नॉट एसोसिएटेड विद ऑनगोइंग मतलब रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से जो चेंज आया है. करेक्ट. वर्डिंग समझ में आ रहा है व्हाई दे आर सेइंग नॉट एसोसिएटेड विद ऑनगोइंग एक्टिविटीज. राइट. ऑनगोइंग एक्टिविटी तो चल रही बट रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से क्या चेंज आया, विल ऐड दोस कॉस्ट. ये सारी कॉस्ट हटा. या कंटिन्यू. Only those costs that affects the reconstructing, only we रिस्ट्रक्चरिंग. will add that या restructuring, right? या retraining और relocating continuing staff, marketing, investment in new system, ये सारी कॉस्ट हम ऐड नहीं करेंगे. Got it. ठीक है. बिकॉज लॉजिकल ना, इट्स नॉट एन अनअवॉइडेबल, इट्स नॉट अनअवॉइडेबल. Hmm. ठीक है ना.
Now I want you to solve this question. Just tell me what costs are going to be included or excluded. First, voluntary compulsory redundancies. Um, रिडंडेंसी मतलब एम्प्लॉय को जो रिडंड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट, रिडंडेंसी हटा रहे हैं, एम्प्लॉय को रिडंडेंट कर रहे हैं। no, व्हाई नो? कंपलसरी है ना, विल इंक्लूड रिडंडेंसी कॉस्ट। right is unavoidable. हाँ, right. Lease cancellation fee for a factory that will no longer be used. We won't include it because it's no longer be used. नहीं, पांच क्या क्या कहना चाह रहा है, 10 साल की लीज है, आफ्टर 5 years वी आर नॉट नो लॉन्गर यूजिंग इट, बट पेनल्टी तो पे करेंगे ना, क्योंकि बिटवीन लीज टर्म्स बोल रहे हैं, लीज कैंसिलेशन फी क्या कहना चाह रहे हैं, कैंसिलेशन हम कैंसिल कर रहे हैं, पेनल्टी पे कर रहे हैं, विल इंक्लूड। Okay. क्या समझ, रीस्ट्रक्चरिंग का यही है कि वी आर चेंजिंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैक्ट्री जो थी, आई एम चेंजिंग द लोकेशन ऑफ द फैक्ट्री, और जो करंट फैक्ट्री है वो लीज पे है 10 साल, और 5 साल, 5 years हो गए, 6 से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं मेरी लोकेशन ही चेंज कर रहा हूँ, पर बिकॉज ऑफ हम्म. द 5 year मुझे पेनल्टी पे करना पड़ रहा है, तो हाँ. दैट इज द अनअवॉइडेबल कॉस्ट ना। Right. करेक्ट, विल इंक्लूड। नाउ रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड रिलेटेड इक्विपमेंट। We will include it. So, आर यू रीडिंग? yes, we will include it. Huh? कुछ आया समझ? Yeah. Sorry, my mistake. But इसमें reallocating of continuing staff है ना? In this question, it's just written reallocation of employees. हाँ, relocation of employee, that is not our unavoidable cost, that is not cost which is ongoing. We would include relocation and all, relocation, training, marketing, equipment, we don't include this part. Okay. Recruitment cost, marketing cost, this all won't be included. Investment this भी नहीं आएगा. this investment of distribution network भी नहीं। Okay, future identified operating losses up to date of restructuring। Good. Now I want you to solve this. uh, how, what is the answer for this last four, future, this one, future of it, what is Future the answer? identified by I'll give you operating the hint, this is linked to this second point, not associated with ongoing activity. operating losses. Up It's to the for date of restructuring, हाँ. मतलब रिस्ट्रक्चरिंग के दिन तक, रिस्ट्रक्चरिंग के बाद का जो लॉस है वो तो प्रोविजन उसमें रिकॉर्ड करेंगे, हाँ. बट अप टू द डेट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग इट्स नॉट एसोसिएटेड विद ऑनगोइंग एक्टिविटीज ना, सॉरी, इज एसोसिएटेड। ऑनगोइंग एक्टिविटीज ही तो है, तब जब तक हम रिस्ट्रक्चर नहीं कर रहे हैं, तो इट्स एन हम्म. ऑनगोइंग एक्टिविटी, तो वी डोंट इंक्लूड। अगर नॉट एसोसिएटेड ऑनगोइंग एक्टिविटीज तब हम इंक्लूड करेंगे ना। Yes. नॉट एसोसिएटेड ऑनगोइंग मतलब क्या? रिस्ट्रक्चरिंग के बाद का, बाद की चीज। Yeah, this is the up to date. हाँ, अप टू डेट, तो विल व्हाट? We will not include it. करेक्ट, इम्पेयरमेंट राइट डाउन। Um, we will include it. Loss हुआ है for reconstructing, so that expense we will include it. बट वेर इट्स रिटर्न दैट रिकंस्ट्रक्टिंग है, ऑल्दो ठीक है, लॉजिकली यू आर राइट, अगर रिकंस्ट्रक्टिंग रिकंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है तो
विल इंक्लूड, अगर नहीं है तो विल एक्सक्लूड। तो ये क्वेश्चन ही साइलेंट है, तो यू हैव गिवन बोथ द आंसर, इंक्लूड कब करना है कब नहीं करना है, तो यू आर राइट। The last second, the cost of remaining non-cancellation term of an operating lease after operation cease. After operation cease. 1 second. After operation cease, 5 year, 10 years की factory की lease term. After हाँ, 5 years, I'm changing the factory. Operations of that factory has been ceased, but still I have to pay the lease penalty, right? So are we we going will to include it. Yes, yes. Acquisition interest integrated cost? No. Why no? It's same as the uh, acquisition integrated cost mean, Investing. yeah. What are onerous contract? If you remember, I've explained you onerous or onerous. The See, I usually contract pronounce this as onerous, but the actual pronunciation is onerous. where we incur loss in spite of completing or non-completing the project. Perfect, perfect. तो क्या होगा? अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, आर ग्रेटर देन इकोनॉमिक बेनिफिट, करेक्ट? Hmm. यस, अगर नो है तो नो प्रोविजन रिकॉर्डेड, अगर यस है विल रिकॉर्ड द प्रोविजन लेस द पेनल्टी अमाउंट। Provision is lower of what? Cost of terminating and net continuing. For example, if I a loss making project, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है मेरे लिए लॉस मेकिंग, अगर मैं लॉस मेकिंग को कंटिन्यू करता हूँ मेरा 200 रुपये का लॉस होगा, बट अगर मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ Hmm. मेरा लॉस होगा 600 का पेनल्टी। Right. तो व्हाट आई डू, मेरे लिए तो दोनों ही मेरे लिए लॉस मेकिंग चीज है। इट्स वंडरस फॉर मी, करेक्ट? व्हाट आई डू, स्टैंडर्ड से लोअर ऑफ मतलब 200 की प्रोविजन में रिकॉर्ड करूँ, एंड द सेम वी वर डूइंग इन रेवेन्यू एज वेल, IFRS 15 we were booking the loss as provision. Why? Because lower of 2, अगर हम कंटिन्यू करें या ना करें, lower of 2, Right. correct? Solve this question. I can't see the question. Yeah. I think provision is not required Why? because we are paying. No, no, right. No, no, no. Lower of two, we will include it. Hmm. Yeah, so provision will be included of 800 a month. But
if as per logic will go, if we used to pay 1,000 a month before, giving it to lease to company C for 800, then we are capable of paying the um, amount. So like, See, why we will? what question is saying, company we used to pay for our office 1,000 a month, Hmm. rental rent cost. बी वेकेट जो ऑफिस वेकेट कर दिया, for बेटर लोकेशन को मिल गई इसलिए। Hmm. लीज है कि और 12 महीने चलेगी। Hmm. करेक्ट। इसमें कैंसिलेशन टर्म पीरियड नहीं दिया होगा, बट इसमें बोला कि बी सबलेट 20,000 का खर्चा खुद बेयर कर रहा है, और उसने सबलेट कर दिया, मतलब किसी थर्ड पार्टी को दे दिया कि 1 साल और तू यूज कर ले एंड पे मी 800 नॉट 1,000। ओके, तो 1,000 into 12, 12,000. 12,000 if I continue, अगर मैं नहीं, if I vacate it, मेरा इनकम आ रहा है 96 का, मेरा नेट खर्चा कितना है? 2,400. ठीक है, दिस इज द प्रोविजन अमाउंट, Hmm. करेक्ट। Right. इसका लॉजिक ये है, यहाँ से लिंक है। सी दिस लास्ट, recognize provision less contract can be terminated without penalty। अगर मैं नहीं 800 उसको सबलेट करता तो मेरा 12,000 का खर्चा आता, Hmm. मतलब मैंने कर दिया तो मेरे को इनकम भी तो आ रही था। 24 इज माई नेट कॉस्ट, लेस टर्मिनेटेड विदाउट पेनल्टी। Right. करेक्ट, मतलब लॉजिक वही है। लॉजिक क्या है रिकॉर्ड करने का? प्रोविजन डोंट गो विद दिस लोअर ऑफ एनीथिंग। अगर मैं तेरे को, if someone somebody asks you Hmm. that you have a contract and it's a loss making contract, you have either two options: either proceed with the contract, you will lose 100 rupees, Hmm. and if you break the contract, you do not continue further, you will lose for 500। what you will do? You will see यार 100 का ही loss हो रहा है, it's better to complete logically ना। Hmm. Yes. There is nothing lower of these two, there is nothing formula, anything, just go with the logic, common Right. sense. Yeah. The last topic which we have in provision is environment provision. You know this environment provision, now explain me what you have learned already regarding environment provision. We know, if you could link with this other standards which we have learned, and I want you to link it, please. Environment provision. Oh, right. Got it. Dismantling cost. Right, Hmm. वो क्या था? वो यही था एनवायरमेंटल प्रोविजन। इसमें कुछ भी नहीं है। इट्स अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नेक्स्ट 10 ईयर 5 ईयर हम डिस्काउंट करते हैं उसको, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट को ऐड करते करते विल इंक्रीज द अमाउंट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, विद इन 20 ईयर्स, अगर इट्स लिखा हुआ था समवेयर की $20 million वी आर गोइंग टू इनकर इन नेक्स्ट 12 months,
next Hmm. 20 years, at the end of 20 years, decommissioning cost, dismantling cost. आज की क्या प्रेजेंट वैल्यू है उसकी, वी रिकॉर्डेड एज पर दैट, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट को ऐड करते करते वी रीच 20 years with the same amount. करेक्ट. Right. दैट इज द प्रोविजन. हम हर साल प्रोविजन को इंक्रीज भी तो कर रहे थे, क्योंकि एवरी ईयर वी वर क्लोज टू 20 years, 1 year close to 20 years, 19, 18, 14, 15, right? Hmm. 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 So we were unwinding the discounted value, and the unwinding cost where we were charging it. Um, PNL, But at what term? What is the terminology? Finance cost, interest cost, what? finance cost. Correct. ठीक है. There's one more chart I have, same as the book, same as given the book, but in more good way. Snapshot. Start. क्या present obligation है? As a result of past obligation, as a result of past event. No. तो हम देखेंगे possible obligation है. No. To do nothing. अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, यस, तो क्या वो ऑब्लिगेशन प्रोबेबल है? इफ यस, क्या रियलाइबल एस्टिमेट निकाल सकते हैं? इफ यस, प्रोवाइड फॉर प्रोविजन. करेक्ट. अगर Hmm. वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, आंसर इज यस. इफ योर आंसर इज अगेन यस, देन डिस्क्लोज इट. करेक्ट. सेम. सॉल्व दिस रिकैप. Just don't go with the question कि कौन से ट्रू है. आई वांट एवरी ऑल फोर टू बी आंसर्ड बाय यू, कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, विद रेशनल. Yeah. 1 minute. देन क्विज टू. सॉल्व दिस थ्री. For the first question, the provision is measured on the basis of most likely outcome and not on the basis of best estimate, so it's false. Who told you best estimate is false? I told you, na, it's a best estimate. We estimate best possible outcome.
पॉसिबल आउटकम जो भी हो सकता है, इससे बेस्ट एस्टिमेट, उस आउटकम का बेस्ट एस्टिमेट वी आर बुकिंग. आउटकम इज, या बेस्ट पॉसिबल आउटकम विद बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट. उस आउटकम का बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट क्या होगा? इट्स ट्रू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट्स नॉट फॉल्स. Okay, got it. Second is true, and there is a result equally likely estimate. An entity provides lowest amount in the range. Lowest of two, as you said. When there is a range of equally likely estimates, the entity provides the lowest amount in the range. How? In wondrous we choose the lowest ना, but equally उसमें भी equally likely estimates का है. उसमें ये थोड़ी है कि 400, अगर एस्टिमेट कंप्लीट किया फिर भी 400 है, अगर बीच में ब्रेक कर जाए फिर भी 400 है. इक्वली लाइकली एस्टिमेट थोड़ी है. इट्स नॉट, इट्स फॉल्स ना, स्टेटमेंट इटसेल्फ इट्स फॉल्स. सी, वेयर आर यू कंफ्यूज? Provision is an estimate created by an entity for the possible outcomes that they can sense it, and based on that they create the best possible estimate, and based on that they book the provision. Hmm. Correct. The second तो क्या ही कह रहा है? Second is saying when there is a range of equally likely estimates, an entity provides the lowest amount in the range. Statement ही अगर equally estimates तो lowest कैसे होगा? Right. What is the third? I think it's true because in large population, if we take weighted outcomes, it gives better estimated result than. The same we did here, no? Where we did? Somewhere we did, no? Yeah, this one. More than multiple outcomes, we based on the weighted average percentage, we multiplied and got the expected value. Yeah. Fourth one is false because we take expected value, not present value. But we take present value as well, na? Discounting environment provision, you forgot. But it's not only always present value, right? But the question में भी तो कहाँ लिखा है it's always present value. A provision is measured at present value, so it, yes. But it's also measured at expected value. Present value is only for one thing, environment one. It's true, true. A provision. लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ना. Question is simply asking a provision is measured at its present value. So yeah, we measure it on present value. ना वो कुछ कह रहा है आगे कि कौन सा प्रेजेंट वैल्यू है, बट और ना हम कुछ समझ सकते हैं. तो जो जो जितना लिखा है दैट इज करेक्ट ना, जितना लिखा है. Yeah. सेकंड प्लीज.
Sorry. If it's less than probable, then we will not include it as a provision. Correct. We will not recognize as a provision. Mm-hmm. Um, we will also not absolutely make no provision. So I think the better answer for it is option number B. We'll disclose it. Which liabilities, is it a provision or a contingent liability? What does it? In this question, it is contingent liability Why contingent liability? because it is less than probable But more than? remote. Yeah, so it's possible. Correct. Question. Quiz 3. With rationale all. Same. Is my Same answer. answer right? Yeah. Yes, you're right. Be confident. You are right. It's less than probable but more than remote. यहीं से ही पढ़ के समझ आ जाना. It's a contingent liability. ऑप्शन बी टिक मार्क खत्म. बेकर डिस्क्लोजर. अगर कंटीजेंट लायबिलिटी है तो डिस्क्लोज करना. अकाउंटिंग ही क्यों करनी है उसकी? Hmm. करेक्ट ना? ऑप्शन वन इज रॉन्ग. रिकॉर्ड अ प्रोविजन ऑफ दिस पॉसिबल ऑब्लिगेशन. पहले तो पॉसिबल का हम रिकॉर्ड करते ही नहीं, सब प्रोबेबल का करते हैं, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट इज रॉन्ग. मेक नो प्रोविजन और डिस्क्लोजर, वो तो गलत है क्योंकि कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोजर करना जरूरी है. लास्ट सेट असाइड एज एन अप्रोप्रिएट एंड कंटीजेंट रिजर्व एन अमाउंट बेस्ड ऑन, ये तो स्टैंडर्ड से कुछ अलग ही कह रहा है. बोल रहा है रिजर्व क्रिएट करो फिर सेम अमाउंट का जिससे बेस्ट एस्टिमेट बन सके और ये सब करो. वो तो स्टैंडर्ड कह रही था. सो फर्स्ट सी एंड डी इज रॉन्ग. डी इज द करेक्ट. Right. Just a second. I think A is true. A reconstructing provision is only can be started or recognized once the management has made a firm decision. But where it's written, once management has made a decision, it's just that it's written here. Man. It's written that But decision or plan should be taken first, no? board decision on it's not sufficient. Only the board decision is not sufficient. Oh, I Basically, mixed up with plan. yeah. Yeah, right. Even if see, what is the logic why we are only recording इसका एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो चुका है. ऐसे तो हजारों चीज बोर्ड डिस्कस करती है. नहीं यार आज कुछ ये करते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कि हर एक डिसीजन का नॉर्मली कुछ ना कुछ थोड़ी प्रोविजन रिकॉर्ड करते रहे जिसका वैलिड Hmm. एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो चुका है. कंस्ट्रक्टिव कैसे आ रहा है? कंस्ट्रक्टिव, फॉर एग्जांपल यू हैव क्रिएटेड एन एक्सपेक्टेशन की it's your expect it's your image in the society that you always score 95% above in every standard. Right. So next year, yeah, it's on you. It's constructive obligation for you to score more than 95%. एक इमेज बना दी है सेम एज ये कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन डिसीजन तो ले लिया, ठीक है, इट्स फेयर, बट जब तक लोगों को नहीं बताया जो भी इम्पैक्ट होने वाला है तब तक इट्स नॉट Hmm. सर्टेन. द स्टैंडर्ड सेज टिल दैट टाइम इट्स नॉट सर्टेन, और जब सर्टेन हो गया, सर्टेन का माना जाएगा तब ऑलरेडी सब एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो चुकी है. अगर एंटिटी एक्सपांड कर रही है तो नए बायर्स ढूंढ लिए हुए हैं, नई प्रॉपर्टीज देख ली हुई है, लोकेशंस देख लिए हुए हैं, मार्केटिंग में स्पेंड हो चुका है. ऑल दो मार्केटिंग कॉस्ट वोंट बी एडेड इन प्रोविजन, बट स्टिल इट्स एक्सपेक्टेशन तो क्रिएट कर रहा है ना मार्केट में कि कंस्ट्रक्टिव एक्सपेक्टेशन की ये कुछ कुछ ऊपर नीचे कर रहे हैं, कुछ रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है इस Hmm. कंपनी में. Hmm. Right. करेक्ट. That's how that is the logic. So first is false.
So the correct is B. B would be what? True. Why true? Only an बस this सुनने में. contract या word. is based on the least, the lowest of net cost to complete our exit. Correct, correct. Nice, nice answer. C. What is C? False. All other are false. The cost provided for can be internal or external, must be incremental. अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आया साइलेंट क्वेश्चन तो क्या इससे समझ आ रहा है? कॉस्ट मस्ट बी या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल बट मस्ट बी इंक्रीमेंटल. इंक्रीमेंटल मतलब बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रक्चरिंग कुछ इंक्रीमेंटल हुआ है उसके वजह से कॉस्ट आई है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कुछ Hmm. डिसीजन लिया उसकी वजह से इंक्रीमेंटल कॉस्ट आई है. करेक्ट, सो इट्स Hmm. ट्रू. जो कॉस्ट प्रोवाइड हुई है can be internal or external, but it must be incremental because of the decision we have taken. It should be incremental because of the restructuring we are doing. It's an incremental. It should be incremental. But Okay. it can be discriminal as well, ना? Discriminal. मतलब बढ़ भी रहा है लेकिन कम भी हो सकता है ना? नहीं, इंक्रीमेंटल मतलब ऐसा नहीं कि बढ़ रहा है. इंक्रीमेंटल का मतलब होता है, डू यू नो इंक्रीमेंटल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, sunk cost? Have you studied this ever? Yeah, right. Yeah. What is opportunity cost? Cost of not doing something. It's an opportunity cost. Hmm. इंक्रीमेंटल कॉस्ट में जो चीज हम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कॉस्ट दैट इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट. Cost Hmm. incurred because of contract. So what the statement is saying, cost provided, provision recorded for can be external or internal, but must be incremental. At least वो incremental cost होनी चाहिए because Mm-hmm. of something. Correct. Right. So this statement is true. So B and C are true. Yes. Provisions can be remeasured at any point of time. Correct. Remeasure. ना we are for decommissioning cost we are remeasuring every year. Hmm. करेक्ट. अनवाइंडिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में चार्ज कर रहे हैं, लाइबिलिटी को हर साल रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इवन एस्टिमेशन को भी कर रहे हैं. 2 साल पहले लग रहा है $10 million की लाइबिलिटी आएगी, नेक्स्ट ईयर हो गया $5 million की आएगी. 5 million. इट्स एन एस्टिमेट ना, वी आर रीमेजरिंग इट एवरी ईयर. Hmm. करेक्ट. Even the contingent liability in SBR I've studied in SBR you will come across cases where the contingent liability is getting probable. अब तो अभी तक तो एफआर में कुछ नहीं होगा कि हाँ ठीक है पॉसिबल है तो डिस्क्लोज करो, बट एसबीआई में यू विल फाइंड सम केस वेयर कंटीजेंट लायबिलिटी कि आज लग रहा है कि लायबिलिटी पॉसिबल है बट नेक्स्ट ईयर लग रहा है कि प्रोबेबल आ सकती है. हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है. Right. Hmm. तो हम फिर हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ऐसे केसेस भी होंगे एसबीआर में. तो अभी तक तो ठीक है, सॉर्टेड हो इन एफआर, बट यू विल गेट फ्यू केसेस. तो वी हैव टू रीमेजर एवरी ईयर, प्रोविजंस आर वी हैव टू रीमेजर. So this one is true. Understand. Okay. I think we have to cover one more topic today. IS 10, event occurring after the balance sheet date of the same chapter itself. IS 37 is completed, right? Yeah, IS 37 is done. Let's take 10-15 minutes of break. Let's meet at 1:35 sharp, and we'll continue with our last topic, IS 10, event occurring after the balance sheet date. It's a small topic, Um, just a suggestion. If it's not small, if it's a small topic, can you just complete it? so you do not need break. No. Okay. If you want to take, I have no issue. No, I usually take breaks in between when I change the topic. So it's my No, you constructive said na, constructive image. it's It's my constructive image that I've built. yeah, I understand, but if it's small, then let's just Yeah, complete it and ठीक है, no call it worries. off. Okay. IS 10, Hmm. event occurring after the balance sheet date.
This question was tested in financial accounting. This topic. Which one? IS-10? Yeah, events Yeah, after reporting yeah, date. yeah. Okay. So what is the, do you have any idea what is IS-10 event occurring after balance sheet date? Some crux I can say that such transactions that occurs after a year end, a specific year end, Mm-hmm. we make we assess those transaction and see that if it can be adjusted or not, and if it's adjusted, then we make the adjustment, or if it's not, like if it's something unusual, then we only disclose it in the notes to accounts. That's it. This is the chap standard. We are done. Yeah, but you have to explain. Okay. The event occurring after the balance sheet date. Uh, any event which occurs after the balance sheet date, which is the reporting date. Let's take an example. Reporting date is December 25. Okay. Hmm. Anything occurs after this date would be assessed if that particular thing was existed during the year. If our Okay. answer is yes, we'll book that change in our, we'll put an adjustment in our current year. If it's Hmm. not, we won't adjust it. We'll adjust next year. Okay. Current year. Okay, exactly. Let's see a few examples. Let's understand the definition of it. Read it once. Adjusting events that events after the reporting date that provide additional evidence of condition existed at the reporting date. What is it? Hmm. Events after the reporting that provide additional evidence that were existed at the reporting date. That are those are Right. adjusting events. Right. If they are not providing evidence that they were existed during the reporting date or during the current year, we'll adjust next year. Hmm. These are the examples. Irrevocable debts arising after the balance sheet date. Debts. Debts इसका मतलब that those this means account receivable. It Hmm. means those were existed during the year क्योंकि हमने उनको sell किया था. They were existed. Yes. Next तो and after reporting date हमें पता चल रहा है कि those are irrecoverable. Those are bad debts. Hmm. ठीक है तो we will account for bad debts in our current year because it provide evidence that the event was existed at the reporting date as well. Right. Correct? Understood. Sale of inventory below cost providing evidence of net realizable value. आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट हमारी जो इन्वेंट्री है उसकी उसकी जो कॉल उसकी जो सेलिंग वैल्यू है वो बिलो कॉस्ट हो गई. Hmm. इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं 10 रुपए की चीज दैट इज माई सेलिंग वैल्यू एंड माई कॉस्ट फॉर दैट वाज 5 रुपी और मैं उसको 4 रुपए में बेच रहा हूँ तो मेरी क्या पोजीशन हो गई होगी उस टाइम पे? या तो कुछ ना कुछ इन्वेंट्री में गड़बड़ है. Hmm. करेक्ट. तभी मैं उसको बिलो कॉस्ट बेच रहा हूँ. लाइक ब्रेक इवन पे भी नहीं चल रहा हूँ. आई एम सेलिंग एट 4. आई एम टेकिंग लॉस ऑफ वन Right. रुपी Hmm. इसका मतलब इन्वेंट कुछ ना कुछ है कि कुछ ना कुछ हुआ होगा एट द रिपोर्टिंग डेट की दैट लेड टू ऑब्सोलेंस ऑफ इन्वेंट्री. Right. Yes. तो हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पे एडजस्ट करेंगे. Okay. हम इन्वेंट्री को कैसे दिखाते हैं एज पर आईएस टू लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी. Hmm. कॉस्ट इज 5 रुपी बट हमें एनआरबी दैट इज नाउ मार्केट वैल्यू इज 4. तो हमें 4 रुपए पे उसको बुक करना पड़ेगा नाउ. दिस इज द एडजस्टमेंट वी आर गोइंग टू डू इन इन्वेंट्री सेक्शन. Right. करेक्ट. तो 1 रुपए का लॉस भी हम बुक करेंगे. उसकी वजह से प्रॉफिट भी चेंज होगा. टैक्स भी चेंज होगा क्योंकि प्रॉफिट के बेस पे टैक्स होगा. तो जैसे प्रॉफिट इंपैक्ट होगा टैक्स भी इंपैक्ट होगा. Hmm. रिटेन अर्निंग इंपैक्ट होगा. करेक्ट. तो एक चीज की Yes. वजह से कहाँ कहाँ इंपैक्ट हो रहा है. ठीक. Hmm. Right. अमाउंट अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम विच वर being negotiated at the reporting date. टू वे आइदर प्रोविजन और कंटिजेंट असेट. इंश्योरेंस क्लेम या तो हमारा कोई इंश्योरेंस क्लेम है या तो हमसे कोई क्लेम ले रहा है. टू वे सिनेरियो. Hmm. करेक्ट. या तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है या तो असेट है हमें कोई दे रहा है तो.
इसका मतलब अगर इसका कोई डिसीजन, फॉर एग्जांपल क्लेम चल रहा था, एट द रिपोर्टिंग डेट हमने उसको बोला कि केस की जो क्लेम था, द पेएबल अमाउंट वाज $12 million, हम्म। बट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट हमने उसको $13 million पे, हाँ, आ गया कि $13 million पे करना है। इसका मतलब 1 million का प्रोविजन और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन तो एग्जिस्ट कर ही रहा था रिपोर्टिंग डेट पे। हाँ। करेक्ट, तो हमें एंट्री क्या पास करेंगे, अब हम प्रोविजन को भी चेंज करेंगे, उसकी वैल्यू $12 million से $13 million बुक करेंगे, और $1 million का लॉस। राइट। करेक्ट, डेबिट लॉस क्रेडिट प्रोविजन बाई 1 million। हम्म। सेम एज कॉन्टिजेंट एसेट एज वेल, अगर लास्ट एट द रिपोर्टिंग डेट लग रहा था इट्स इट्स प्रोबेबल, प्रोबेबल हम डिस्क्लोज करते हैं, करेक्ट, कॉन्टिजेंट हम्म। एसेट, बट अगर वर्चुअली सर्टेन है तो विल रिकॉर्ड। अगर राइट। प्रोबेबल है, हमने डिस्क्लोज किया था, बट नेक्स्ट ईयर आफ्टर रिपोर्टिंग डेट कंफर्म हो गया कि नहीं नहीं इट्स वर्चुअली सर्टेन, हमको पैसा मिलेगा, आवर इंश्योरेंस क्लेम विद बी क्लेम। करेक्ट, हम्म। तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे फिर हमारे बुक में एसेट, डेबिट एसेट क्रेडिट इनकम। ठीक है। राइट। डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और एरर्स, इसका मतलब फ्रॉड और एरर तो रिपोर्टिंग डेट पे हो ही गया ना, हमें पता रिपोर्टिंग डेट के बाद चला, बट उस टाइम पे हम्म। फ्रॉड और एरर एग्जिस्ट तो कर रहा था, तो हमें चेंज करना पड़ेगा जो भी एरर और चेंज हुआ था। आज हमने एक एरर का क्वेश्चन सॉल्व किया, विच वन वाज? 5530 उसका आंसर था, योर लास्ट 1990 लास्ट 96 क्वेश्चन क्वेश्चन। नंबर, लास्ट क्वेश्चन। 92। 92। यस, यस। सो इसी तरीके से हम चेंज करेंगे। उसमें क्या क्वेश्चन था, लास्ट ईयर एरर एरर हुआ था, हम्म। हमने चेंज करंट ईयर में किया, उसी हम्म। रिगार्डिंग। बट इम्पैक्ट क्या हुई, ओपनिंग इन्वेंट्री इम्पैक्ट हुई, जो लॉस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दिखा रखा था लॉस, हमने उसको कहाँ चेंज किया, रिटेन अर्निंग में चेंज किया, ओपनिंग रिटेन अर्निंग। ओपनिंग रिटेन अर्निंग क्या थी, क्लोजिंग ऑफ लास्ट ईयर, राइट। तो ओपनिंग चेंज किया तो लास्ट ईयर भी चेंज, हाँ। बस वही किया था। वी करेक्टेड द एंट्री। हम्म। नॉन एडजस्टिंग इवेंट, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नॉन एडजस्टिंग। अ मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, एक उस टाइम पे कुछ था नहीं, डिसीजन डिसीजन कुछ था नहीं, नेक्स्ट ईयर एकदम से लगा कि कुछ करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन, किसी को बिजनेस को खरीदते हैं, तो इट्स नॉन एग्जिस्टिंग, नेक्स्ट ईयर ही होगा सब कुछ, करंट करंट ईयर में कुछ एग्जिस्टिंग इवेंट था ही नहीं कुछ, मतलब हम्म। कुछ एविडेंस प्रोवाइड करे कि वो एग्जिस्ट था। राइट। डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर प्रॉपर्टी प्रोड्यूस प्लांट, ये तो एबनॉर्मल इवेंट है, तो डिसाइड सोच भी नहीं सकते। हम्म। सेम एबनॉर्मली लार्ज चेंज इन असेट प्राइसेस और फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। करेक्ट। यस। जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी आर डन फॉर द डे। What are adjusting and what are non-adjusting events? हम्म। जस्ट a second. um Yeah. Insolvency of customer, this, as mentioned in the question, that this all events are occurred in January 2x8, which is after the year end. Mhm. So insolvency of customer will be non-adjusting. Why non-adjusting? Insolvency हुई, पता चला रिपोर्टिंग डेट के बाद, विच इज इन Jan 8, अक्कड़ हाँ। भले ही हुआ, बट वो कस्टमर हमारे बुक में अकाउंट रिसीवेबल में तो शो कर रहा था ना लास्ट ईयर, एज एट 31 दिसंबर 2087, इररिकवरेबल डेट, वही तो मैंने बोला अभी, राइट। इन एडजस्टिंग ये। इवेंट इररिकवरेबल डेट, बट हम्म। हमारे अकाउंट रिसीवेबल में तो शो कर रहा था ना बैलेंस शीट डेट में, तो मतलब राइट। एग्जिस्टेंस तो था ही ना। राइट।
So Loss of flood, non-adjusting. it's non-adjusting. Completion of purchase of another company. Non-adjusting. Fourth is adjusting. Fifth is also adjusting because it is before the reporting date, which is August. And What is third one? Fourth one, sorry. fourth is adjusting, And fifth one? also adjusting. Correct. Why? Because it's settled in August, but August. existence was high na December. Existent हाँ. और I'm not sure about last one. अरे फ्रॉड और एरर कुछ हो गया तो फ्रॉड और एरर तो एग्जिस्ट कर ही रहा था ना रिपोर्टिंग डेट पे हमको पता चला नेक्स्ट ईयर दैट इज फाइन बट उस लास्ट ईयर था तो सही ना इट्स एन एग्जिस्टिंग इवेंट Okay, got it. Yeah. करेक्ट ना Hmm. there is one exemption in this area. Hmm. I'll just read it quickly. Come on. These are events arising after the reporting date, which is the non-existing one, but which do not concern situation existing at reporting date. Correct? जो Hmm. सिचुएशन रिपोर्टिंग डेट पे थी उसको कोई कंसर्न दे नहीं रही कौन से नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट Hmm. such events will not therefore have any effect on items in financial position or statement of profit and loss prepared कोई impact नहीं आएगा Hmm. however where non-adjusting event after the reporting date are of such importance that non-disclosure would affect the ability of the user of the financial statement to make proper decisions and entity disclose correct क्या क्या Right. कुछ कुछ डिस्क्लोजर ऐसे होते हैं ना कि एंटिटी को बनाने पड़ते हैं करने पड़ते हैं फॉर एग्जाम्पल गोइंग कंसर्न हमें आज इफ द ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2007 हमें Hmm. नेक्स्ट ईयर का बोल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि वी आर गोइंग कंसर्न we we our company has ability to continue for future years that is going concern concept correct Right. अगर हमने ये डिस्क्लोजर नहीं दिया इवन दो नेक्स्ट ईयर हम अगर गोइंग कंसर्न नहीं है करेक्ट इवन दो Hmm. गोइंग कंसर्न को कुछ हैम्पर आ गया नेक्स्ट ईयर आ गया कोई डिस्टर्बिंग टेक्नोलॉजी आ गई कोई पॉलिसी आ गई कंपनी बंद करनी पड़ गई लॉस कुछ भी हो गया ठीक है Hmm. तो दैट इज अ नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट वी अग्री कि उसका कोई रिलेशन था नहीं क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो भी चेंज आया आया बट एक साल पहले हमें हमारी पोजीशन तो देखनी पड़ेगी ना कि आर वी फीजिबल क्या हमें देखना चाहिए क्या हमारी कंपनी फोर्सिएबल फ्यूचर तक चल सकती है कि नहीं तो अगर वो Hmm. डिस्क्लोजर नहीं दिया तो Right. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इवेंट करेक्ट Okay. Hmm. do you know how dividends are getting paid dividends are discussed at board meeting then we propose and then dividend are proposed and then dividends are approved by board ठीक है these are the procedure question is saying equity Hmm. equity dividends proposed before ठीक है proposed हो गया but approved and paid after the reporting date may not be included as a liability as a reporting date we account for dividend cash basis so they are non-adjusting so they are non-adjusting event occurring after balance sheet but must be disclosed as required by IAS 1 करेक्ट प्रपोज्ड हो गए बट अप्रूव्ड रिपोर्टिंग डे के बाद हुए तो इट्स नॉट द करंट ईयर लायबिलिटी इट्स नेक्स्ट ईयर लायबिलिटी Okay. करेक्ट अगर अप्रूव्ड हो जाते हैं Right. टिल द रिपोर्टिंग डेट और पेमेंट नेक्स्ट ईयर हो रही है Then we will include देन it. इट्स अ करंट ईयर लायबिलिटी करेक्ट Okay. ठीक है सो यार Approval is important. या अप्रूवल इज इंपॉर्टेंट अप्रूवल अगर आफ्टर द ईयर एंड है तो इट्स एन इवेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर अगर बिफोर है तो इट्स एन इवेंट ऑफ करंट ईयर Got it. गॉट इट Yeah. just let me confirm there is nothing left yeah Yeah. okay yeah we are done with chapter 15 then both IAS 37 IAS 10 are done let's meet tomorrow with new topic so till then bye goodbye Okay. Bye. Thank you.